Hello everyone. So we are back with this series of lectures on POORI TARAH RATO, and this is the 13th video in that series. In this we'll discuss about how to approach anemia. As we all know that there is always a question on anemia in any exam. So this table is very important to solve those questions. In this we'll discuss that how we approach a patient with anemia. Similarly, we approach the patient with anemia in our wards also. So when a patient comes with anemia, first of all we get a peripheral smear done. In peripheral smear, we look at MCV. If MCV is less than 80, 80 to 100 or more than 100. If MCV is less than 80, then it is known as microcytic anemia, 80 to 100 normocytic anemia, and more than 100 macrocytic anemia. The causes of microcytic anemia, as we all know, and I remembered it as SITA. S for sideroblastic anemia, I for iron deficiency anemia, T for thalassemia, and A for anemia of chronic disease. And in anemia of chronic disease, it can be normocytic in 80% of the population और माइक्रोसिटिक इन 20%. तो जब हमें पता लग गया कि द एनीमिया इज माइक्रोसिटिक, देन हम उसके बाद करेंगे पेशेंट का सीरम आयरन प्रोफाइल. आयरन प्रोफाइल में अगर आयरन लो है, फेरिटिन लो है एंड टीआईबीसी इज हाई, देन इट इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. अगर आयरन प्रोफाइल में आयरन लो है, फेरिटिन हाई है और टीआईबीसी इज लो, देन इट इज एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज. एंड इन आयरन प्रोफाइल अगर सीरम आयरन नॉर्मल है या फिर सीरम आयरन इज इंक्रीज्ड, देन इट इज थैलेसीमिया. For thalassemia, we can also calculate this Mentzer index. Okay, if it is less than 13, then it favors thalassemia. Agar patient is having normocytic anemia, then we get a reticulocyte count done. Reticulocyte count, if less than 2%, then it is known as hypoproliferative anemia. More than 2%, hyperproliferative anemia. Less than 2% reticulocyte count and the anemia is normocytic, and the causes are leukemias, aplastic anemia, and pure red cell aplasia. So for the diagnosis of these, we have to get a bone marrow biopsy done. If reticulocyte count is more than 2%, that is bone marrow is over-functioning. The causes are hemolytic anemia और acute hemorrhage. क्योंकि hemolytic anemia और acute hemorrhage में blood loss हो रहा है. Blood loss हो रहा है तो bone marrow को over function करना पड़ेगा to compensate. Okay. अब if MCV is more than 100, then it is known as macrocytic anemia. Macrocytic anemia में अगर peripheral smear में मेगालोसाइट सिंक है या segmented neutrophil सिंक है, then it favors megaloblastic anemia. Otherwise, it is a non-megaloblastic macrocytic anemia. The causes of megaloblastic are vitamin B12 and folate deficiency. The causes of non-megaloblastic are alcohol, MDS, myelodysplastic syndrome, liver disease, and hypothyroidism. Now let us discuss this very important table in which we'll discuss how to differentiate between iron deficiency anemia, anemia of chronic disease, and thalassemia on the basis of serum iron studies. So we have MCV low in all three because all three are causes of microcytic anemia. RDW is increased in iron deficiency anemia while it is normal in anemia of chronic disease and thalassemia. Serum iron level is low in iron deficiency anemia, we know that. Low in anemia of chronic disease because anemia of chronic disease में क्या होता है, हेप्सिडिन ओवर प्रोडक्शन होता है. हेप्सिडिन ओवर प्रोडक्शन होता है तो बॉडी में आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है. ऑल्सो आयरन के स्टोर्स सफिशिएंट होते हैं क्योंकि उनका यूज भी नहीं हो पाता बॉडी में. ओके, वाइल इन थैलेसीमिया इट इज नॉर्मल या फिर कभी कभी रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन होते हैं थैलेसीमिया पेशेंट्स में तो हाई भी हो जाता है. टीआईबीसी टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी. तो बॉडी को लगेगा जब भी स्टोर्स खत्म हो रहे हैं तो वो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ा देगी, ब्लड में ट्रांसफेरिन के लेवल्स बढ़ा देगी. क्यों बढ़ाएगी? ताकि वो कहेगी कि और लेके आओ आयरन, और लेके आओ आयरन. ओके. अब फेरेटिन लो होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, एज वी नो फेरेटिन इज लो इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो टीआईबीसी बढ़ जाएगा. ओके. वाइल फेरिटिन इज नॉर्मल या हाई इन एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज, बॉडी यूज नहीं कर पा रही है, तो लिवर को क्या लगेगा कि आयरन के स्टोर सफिशिएंट है, तो टीआईबीसी लो या नॉर्मल रहेगा. थैलेसीमिया में एवरीथिंग इज एल्स इज नॉर्मल. फेरिटिन लो होगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज में यूज ही नहीं कर पा रहा बॉडी आयरन को, सो इट वुड बी नॉर्मल और हाई. अगेन नॉर्मल इन थैलेसीमिया. ट्रांसफेरेंस सैचुरेशन. ट्रांसफेरेंस सैचुरेशन मतलब कितना ट्रांसफेरेंट में आयरन है. ट्रांसफेरिन इज अ बाइंडर प्रोटीन, तो कितना ट्रांसफेरिन आयरन से बाइंड है. तो जितना कम आयरन, सो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या है, आयरन कम है और ट्रांसफेरिन सैचुरेशन या टीआईबीसी बढ़ा हुआ है. टीआईबीसी बढ़ा हुआ है और आयरन कम है तो ट्रांसफेरिन सैचुरेशन कम हो जाएगा.
इन एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसीज ट्रांसफर इन सैचुरेशन विल बी नॉर्मल। क्यों ट्रांसफर इन सैचुरेशन नॉर्मल? क्योंकि आयरन कम है बट टीआईबीसी भी कम है। ओके, बट सैचुरेशन विल बी नॉर्मल। पहले थैलेसीमिया नॉर्मल ही रहेगा। ट्रांसफेरिन और टीआईबीसी आर ऑलमोस्ट सिमिलर थिंग्स। ओके, क्योंकि टीआईबीसी इज कैलकुलेटेड कि जितना ट्रांसफेरिन बढ़ेगा उतना टीआईबीसी बढ़ेगा। ओके, सो सिमिलरली ट्रांसफेरिन इज हाई इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, एनीमिया क्रोनिक डिसीज में नॉर्मल, एंड थैलेसीमिया में आल्सो नॉर्मल। सो ऑल द बेस्ट गाइस, ट्राई टू रिमेंबर दिस टेबल बाय हार्ट।